Hello everyone. So welcome to Career Launcher and we are live with the form filling session of NMAT by GMAC. NMAT is conducted by a body that is called GMAC. GMAC is a body that also conducts the exam of GMAT. Okay, so let's start. So step by step registration, form filling process, slot booking and all the questions we are going to cover in this particular session. Okay, so let's start. सो एग्जाम का ओवरव्यू क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं. सो exam, everyone knows about the NMAT exam. It is NMAT is most famous for your Narsi Munji, Mumbai. So so uh, अब इम्पॉर्टेंट डेट्स इसके लिए क्या क्या है, व्हाट आर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. सो बेसिकली रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड एट थर्सडे 20th अगस्त, एंडिंग एट 10th of October 26. मतलब अगर आप इफ यू वांट टू टेक multiple attempts, for example you want to take 2 attempts or 3 attempts, so आपको 10th of October के पहले एक slot book करना पड़ेगा and after that you can have a second slot, you can book second slot even after 10th of October, लेकिन पहला एग्जाम आपको 10th October के पहले बुक करना पड़ेगा. So this is an important date. So your job is to fill the form before 10th of October. Don't worry about the second slot. Second slot बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है. सेकेंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट. शेड्यूलिंग भी 20th अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, थर्सडे एंडिंग 22nd अक्टूबर तक आपके पास चांस है अपना स्लॉट बुक करने का, लेकिन जो पेमेंट वगैरह है वो सब आपको 10th of October तक ही करना होगा. Scheduling of the exam you can do after 1 or 2 weeks after the end date of registration. ये चीज ध्यान रखनी है हमको, ठीक है. अब आगे आते हैं. रीटेक का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ट्यूसडे 3 नवंबर से शुरू होगा, 17 दिसंबर तक चलेगा. सो बेसिकली in between you can go for your second attempt or third attempt, whatever you feel like. So अगर आपको लगता है कि पहला वाला एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, you can definitely go for the second exam. रीशेड्यूलिंग. अब रीशेड्यूलिंग का इशू ये है कि if you have booked the exam and you suddenly realize कि आप उस डेट को अवेलेबल नहीं है, आप because of certain conditions you are unable to write the exam on that particular date or that particular center. So basically you can reschedule your exam on a different date or a different center. So NMAT gives you liberty to choose the date as well as center. सो रीशेड्यूलिंग आपका 20th अगस्त दैट इज स्टार्ट से ही शुरू हो जाएगा और जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक आपके पास रीशेड्यूलिंग का डेट रहेगा. एग्जाम is starting on 2nd of November and it is going till 20th of December. मतलब आप इसके बीच में कोई भी डेट और उस डेट का कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हैं. सो ये चीज ध्यान रखनी है. सो यू कैन चूज द नियरेस्ट center available to you. So that is the good thing about NMAT. But again, remember that you fill the form as soon as possible because सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि आपके पास के सारे सेंटर फिल हो जाते हैं. So last year or last to last year I had to travel a lot because the nearest 2 or 3 centers were completely booked for me. So थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है. इसलिए अगर if you want to book the exam on a certain date, book it as soon as possible and that's what I'm trying to say. Okay, now test fees क्या है कि registration fee है that is 3,000 rupees plus taxes and that come out to be 540 rupees. So total payable amount for NMAT is actually going to be 3,540 rupees. So remember this, इतना total payment है and that is only for NMAT, not for application of NMIMS. ये जरूरी है, ठीक है. रीटेक के लिए अगेन 3,000 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस. सो बेसिकली रीटेक का मतलब आप सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हो, सो यू नीड टू पे द सेम अमाउंट. यू आर टेकिंग थर्ड अटेम्प्ट, यू नीड टू पे द सेम अमाउंट. एडिशनल स्कोर रिपोर्ट्स, ठीक है. सो आप जब एनमैट के थ्रू किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं, सो व्हाट डज दे डू,
कि वो लोग आपको तो स्कोर कार्ड देते ही देते हैं, एज वेल एज दे सेंड योर स्कोर कार्ड टू कॉलेजेस, जो उनके साथ कॉलेजेस एसोसिएटेड है उनको डायरेक्टली वो स्कोर कार्ड भेज देते हैं. सो यू कैन अप्लाई अप टू 5 different colleges through NMAT, and that is free of cost. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको किसी और कॉलेज में अपना स्कोर भेजने हैं तो आपको पर इस रिपोर्ट आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे. 400 रुपए प्लस टैक्सेस, एंड टैक्सेस आर गोइंग टू बी 18%. सो that comes out to be 72 rupees. So total payable amount is going to be 472 for after 5 free colleges. So this is what you can do, but I don't think anyone is going to apply for more than 5 colleges. Reschedule. For rescheduling, again they charge 1200 rupees plus applicable taxes. So taxes are 18%. So that is 216 rupees. So close to 1400 rupees you are required to rescheduling the exam. So make sure when you are filling for the first time, fill it in such a way so that you don't need to reschedule the exam. So that's what is important. ठीक है. B school. So basically, approximately 60 schools, 60 MBA colleges, except your NMAT school, Narsi Munji, all MBA programs, all MBA colleges, Narsi Munji Mumbai, Narsi Munji Navi Mumbai, Narsi Munji Indore, Bangalore. So all those colleges except your NMAT score, and all the colleges as well as KJ Sumaya, SP Jan, your global management program, Great Lakes, Tapmi, SDA Bokoni. So all those colleges except your NMAT score. Okay. Now, official website. So basically, when you are going to register, so just go to Google, search for GMAC by NMAT or NMAT by GMAC, or you can go through Easy Apply as well. Okay. Now, when you are going to go here, register for GMAT and MAT by GMAC. So when you are going to open this page, so click on this link. So basically, your job is to click here, register for NMAT by GMAC. Okay. अब registration process यहाँ से शुरू होगा. So we are going to talk about registration process. So first you go to register. Then you are going to there are going to be 2 things. One is going to be already registered. So basically they are going to give you email ID, and so वहाँ पे आपको वो मिलेगा कि welcome back, you need to place your email ID and password. ठीक है. And if you are registering for the first time for the new registrations, this is the screen that is going to be open for you. Your job is to fill the first name, last name, according to your Aadhaar card, PAN card, whichever proof of ID you are going to use, your email ID, your password. They are not looking for phone numbers, as well as you need to select at least this one. And or even if you don't select any of the things, it's fine, perfectly fine. But I would suggest that select both of them. I'm not a robot, and create accounts, and your account will be created, and they are going to send a mail to you. So उसके बाद जब आपके पास mail आएगा, you need to click on the link, activate the account. So those kind of things are going to happen, and they are also going to ask a phone number. ठीक है. So fill the phone number, select a country where would you like to take the test. So वो सारी चीजें, and then इतना करने के बाद submit, and that's it, good to go. ठीक है. Now, if you got the verification link on your mail, just click on the link, your account will be verified. If your account if you have not received any email from GMAC, then I would say go to spam folder, check once कि कहीं वहां पे तो नहीं चला गया है. अगर वहां पे भी नहीं है, then click on this link, resend email verification link, and your account will be verified. And once the account is verified, you are good to go, and
you are going to reach to your dashboard. ठीक है, एक बार डैशबोर्ड पहुंचे, now after that what is important, your job is to click on register now. तो यहाँ पे register now पे अपन को जाना है. So we are going to go to register now. Then this is the screen that is going to be filled. So this is complete one page. So first you need to select a title. If you are male, select Mr. Mrs. whatever you want to select. Your first name is mandatory, your last name is mandatory, middle name if you have any, fill it. Again, everything needs to be filled according to your official document. Do not uh, write anything that is not there in your official document. Then gender, date of birth, age you don't need to fill, it will automatically consider the date. So you need to fill date of birth, this they will automatically calculate. Category, if there is any, nationality, language, and you need to upload a photo whichever you want to. And I would suggest that upload a recent photo, जो आसपास recent photo है वही upload करनी है. And then your parents detail, your father's name, your mother's name. Identity proof में which identity proof you want to give. You want to give PAN card, is perfectly fine. You want to give Aadhaar card, voter ID, whichever identity card you want to provide, you should provide. And they are not asking for the actual document. Your job is to fill the ID number only. Your name according to ID, you can select which ID you want, and ID number. So yeah, you got Aadhaar card, PAN card, driving license, all those kind of things. Okay, again, this is, are you differently abled? If it is, then select yes, otherwise no. Now, once you are done with personal information, now they are going to ask for contact information. काफ़ी चीज़ें इसमें already भरी होंगी जो आप registration में भर चुके हैं. So one phone number is going to be automatically filled. Your alternate contact number में आप किसी का भी नंबर दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं, अपनी बहन का दे सकते हैं, अपने भाई का दे सकते हैं, जो भी आप चाहें alternate contact number आप देना चाहें दे सकते हैं. प्राइमरी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिल होगी, जो आपने इनिशियली जिस ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया होगा वो ईमेल आईडी यहाँ पे प्री फिल्ड होगी. ठीक है. alternate email id, if you want to give a alternate email id, that's perfectly fine, you should. After that, country, that is obviously India. Then your home address, pin code, and is your permanent address same as the current address? So even if you select yes, it won't actually make a lot of difference, क्योंकि कोई check नहीं करने आ रहा आप उसी घर में रहते हैं या नहीं रहते हैं. So whichever you select is fine. If no, then you have to fill the address again. But anyhow, I would suggest कि जो भी है वो सही सही लिख दो. And then click on next. Then you are going to reach to the next section, that is education or work experience. ठीक है. Highest education में they are going to ask whether you are a graduate or post graduate or those kind of things. Specialization, आप उसमें आपका स्पेशलाइजेशन क्या है उसके बारे में वो आपको बताना पड़ेगा. योर स्पेशलाइजेशन मीन्स योर डिग्री, व्हाट इज योर डिग्री, इट इज बीटेक, बीई और एमबीबीएस और सीए और दोस काइंड ऑफ थिंग्स. आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस. ठीक है. सो वर्क एक्सपीरियंस, इफ यू सेलेक्ट नो, it is going to stay as it is, and click next. If you are selecting yes, then this thing is going to open. अगर no होगा, अगर if you are selecting no, just select next and you will reach the next page, और ये सारी चीजें आपके लिए खुल के आपके सामने आएंगी ही नहीं if you are selecting no over here. If you are selecting yes, then you are also going to see these kind of things, type of engagement, full time, part time, those kind of things, which sector you are working in. So write the number of years you have worked in the industry. Which industry best reflect your experience. So इसमें आपको तीन आपको select करना पड़ेगा कि what kind of industry you have worked in, whether you have worked in manufacturing or IT or those kind of things. ठीक है. Training, teaching, whatever you feel like, तुमको जो लगता है. And this is not something, there is no right or wrong answer, क्योंकि इसमें ये पूछा which industry refers best reflect your experience. ठीक है.
तो आपका एक्सपीरियंस किस कैटेगरी का है, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क। इसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए, इसके लिए प्रूफ चाहिए होगा कि व्हाट इज द वर्क एक्स यू हैव, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं होता है और इसका प्रूफ के लिए आपको परेशान भी नहीं होना है। Are you currently working? If you are working, write yes. If you are not working, write no. और एक बात ध्यान रखना है, जब when we are going to fill total work experience, that should be, sorry, this is 2026. So July 1 2026 तक, 1 जुलाई तक आपका जो टोटल वर्क एक्सपीरियंस है वही लिखना है, उससे ज्यादा का नहीं लिखना है। अगस्त तक का काउंट मत करिएगा, सितंबर तक का काउंट मत करिएगा, 1 जुलाई तक का ही काउंट होगा। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आपका जो भी है उसका नाम भरना है एंड देन यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट एंड दैट्स इट। ठीक है, नाउ यू हैव रीच्ड टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज स्कूल प्रेफरेंस। इसका मतलब कौन कौन से कॉलेज, एंड इफ यू सी इन इंडिया दे हैव associated with 59 colleges. Philippines they have tied up with 8 colleges. नाइजीरिया में 7, साउथ अफ्रीका 12, हंगरी 1, मोरक्को 1। ठीक है, एंड नाउ यू कैन, यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो, इफ यू आर गोइंग टू लुक एट दिस ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज देयर आर 5 free choices available. मतलब you can, when you are going to select a college over here, the first preference should be NMIMS मुंबई, क्योंकि बेसिकली ये नरसिंह मंजी मुंबई के लिए ही एग्जाम है, and majority people who write NMAT they write it for NMIMS Mumbai only, so that should be the first preference. And if you want to add a next preference, click on plus, then you keep on clicking on plus, तो आपके पास और ऑप्शन खुलते जाएंगे। now when you are going to get 5 choices, 1 2 3 4 and 5 choices, तब तक आपका कोई भी एडिशनल पैसा नहीं लगेगा, but as soon as you are going to select 6th choice, they will start charging you, and this is what they are saying, that they are going to charge 472 rupees per college। ठीक है, और you can see all the colleges in the drop down। ठीक है, and once you have selected all the colleges, click on next, and this is the page you are going to get। now about NMAT by GMAT, आपने कहाँ से सुना? You have to select an option, you can select whichever you like, आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगता है वो आप फिल कर सिलेक्ट कर लीजिए। you can select multiple options as well, but you cannot leave it blank, एक तो करना ही पड़ेगा। when do you plan to start your management program? Right, somewhere around June या May 2027, something like this, क्योंकि you are going to apply for the next year, so इस टाइप से कुछ भरना है। and other exams you are planning to take, if you want to fill this, select, it's fine, if you don't want to select it, it's fine। एग्जाम्स यू हैव टेकन बिफोर, अगेन आपको जो सिलेक्ट करना है करिए, नहीं करना है अगेन इट वोंट, इट इज नॉट नथिंग मैंडेटरी टाइप ऑफ थिंग। सो अगर आपको लगता है कि कौन सा एग्जाम आपने पहले लिया है या कौन सा एग्जाम आपको वो करना है या आप लेने वाले हैं, अगर आपको बताना है तो बताइए, नहीं बताना है इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपके एडमिशन प्रोसेस में कोई फर्क पड़ेगा, ना कहीं और कोई फर्क पड़ेगा। सो बेसिकली इट्स कंप्लीटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू fill। if you want for example, if I am going to fill this form, so I am going to select cat, I am going to select zat, I am going to select snap, so मैं ये सारे फॉर्म भरूंगा क्योंकि I am actually filling these forms। एंड यहाँ पे ये पूछेगा कि हाउ यू आर फाइनेंसिंग योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसका मतलब वो ये पूछ रहा है आपसे कि आपकी फीस के पैसे कौन भरेगा, आर यू गोइंग टू fill on your own or are you going to get a loan for your क्या कहते हैं एडमिशन फीस, तो वो चीज वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, सो विच एवर इट इज, जस्ट सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। अगेन इसका कोई भी इम्पैक्ट आपके एप्लीकेशन में या आपके कैंडिडेचर पे नहीं पड़ेगा, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत ऑनेस्टली फिल करनी चाहिए। where would you like to study, select up to 3 countries। so यहाँ पे आप एक बार इंडिया ही भर दीजिए, कोई और कंट्री भरने का कोई सेंस नहीं है। you are applying for NMIMS Mumbai, then select only India। if you are
trying to apply in Nigeria and also you can also fill Nigeria, but I don't think that makes a lot of sense. Are you anywhere associated with helping candidates prepare for management education exam? ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं कोचिंग वगैरह में पढ़ा रहे हैं या आप एडमिशन कंसल्टेंट हैं, सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स इज दिस. सो उसमें आप अगेन आई वुड से कि आंसर वेरी वेरी ट्रूथफुली. इसके रिपरकशंस क्या है, मुझे यस भरने के रिपरकशंस क्या है, आई एम नॉट श्योर व्हाट दे आर. आई जस्ट गो एंड राइट द एग्जाम एंड नथिंग एल्स, and that's it. And once you have filled all those things, that you are going to land at a page of declaration. So यहाँ पे declaration है, completely agree, put your name, the date it is going to automatically consider, and preview and add it. So again preview and add it is an important point. ठीक है, सो प्रीव्यू एंड एडिट, ये जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा फॉर्म, द फॉर्म दैट यू हैव फिल्ड ऑलरेडी, यू कैन सी योर फॉर्म कंप्लीटली. आपको अपना पूरा फॉर्म दिखेगा. अगेन गो थ्रू योर फॉर्म अगेन एंड सी वेदर यू मेड अ मिस्टेक. If there is a mistake, then there is a edit option, edit that mistake, and then uh, uh, submit. And then after that we are going to have submit and make payments. तो ये आपका वो आ जाता है कि यहाँ पे आप सबमिट कर रहे हैं एंड आप पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट करने के बाद जो भी होगा अपन वापस से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे. एंड दिस इज द डैशबोर्ड. ठीक है, स्टेटस, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू गो टू डैशबोर्ड, यहाँ पे आपका लिख के आएगा पेमेंट कंप्लीटेड. फॉर्म इज 100% कंप्लीट एंड पेमेंट कंप्लीटेड. मेरा अभी पेंडिंग है, लेकिन वो पेमेंट कंप्लीटेड आएगा वहां पे. एंड दिस इज, जब हम इस पेज पे जाएंगे डैशबोर्ड में, तो डैशबोर्ड में व्हेन यू आर गोइंग टू स्क्रॉल डाउन, दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू सी, शेड्यूल्ड, रीशेड्यूल्ड, रीटेक, व्यू एग्जाम, एडमिट कार्ड. वो अब यहाँ, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका अब जो कुछ भी होगा वो कंप्लीटली डैशबोर्ड पे ही होगा. एडमिट कार्ड जब ये लोग रिलीज करेंगे आपको तब मिलेगा. एग्जाम के 3 या 4 दिन पहले चेक करिएगा, या 1 हफ्ते पहले, तभी आएगा, उसके पहले आएगा भी नहीं. स्कोर कार्ड जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, आप घर जाएंगे, शाम को आप अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. रीटेक वाली बात अपन बाद में करेंगे. ठीक है, बुक एग्जाम स्लॉट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. सो बेसिकली गो टू वो, यहाँ पे पेमेंट डिटेल जो भी है. ठीक है, अब जब बुक एग्जाम स्लॉट पे जाएंगे, देन so basically when you are going to go to this point, book exam slot, then you are going to reach this page. यहाँ पे slot availability का डैशबोर्ड है. now basically your job is to click on proceed and move to next page. so ये आएगा और इस पे सीधे सीधे आप proceed करिए. and this is how dashboard looks like. So basically what we are going to do, your job is to select the country. आपको किस कंट्री में एग्जाम देना है, किस सिटी में एग्जाम देना है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू सी विच सिटी, और उसके बाद यहाँ पे वो सेंटर ऑटोमेटिकली दिखाने लगेगा. ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है. ठीक है, और वहां पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो वो वहां पे ड्रॉप डाउन दे देगा कि आप दिल्ली में कितने पॉसिबल सेंटर्स हैं. यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द सेंटर्स. ठीक है, आप सेंटर पे वो करोगे तो आपको इस टाइप से डेट दिखना शुरू होगा कि यहाँ पे 3 स्लॉट अवेलेबल हैं थर्सडे को. थर्सडे मतलब ये अपना 6th को. यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके स्लॉट्स अवेलेबल हैं. यहाँ पे भी 3 स्लॉट अवेलेबल हैं. सो ग्रीन मीन्स कंप्लीटली अवेलेबल, येलो मीन्स भरता जा रहा है, बहुत कम सीट्स बाकी है, और रेड मीन्स अवेलेबल ही नहीं है. ठीक है, रेड तो अब उन्होंने दिखाना भी बंद कर दिया. So now whichever you want to, whichever time slot you feel like, and if you want to go to next month, you can just click here and you can go to next month and check. So after that, click on any of the slots. So if you are clicking on 9 a.m. slot, so it means it is booking your 9 a.m. slot. If you are going to 12 p.m. slot, इसका मतलब वो 12 p.m. slot पे वो अपना वो कर रहा है. ठीक है,
you, and यहाँ से आप when you are going to click that, and then your center is going to be booked. That's it, that's the process you are going to follow. और उसके बाद when you are going to come back, then you are going to get this one, this dashboard there, एडिशनल स्कूल प्रेफरेंसेस। तो जहाँ पे हमने 5 कॉलेजेस सिलेक्ट किए थे, उसके अलावा हमें और भी करने हैं, तो हम यहाँ पे आके वापस से और कॉलेजेस वो कर सकते हैं। इफ़ यू विश टू रीशेड्यूल द एग्जाम, यहीं पे आपको रीशेड्यूलिंग का वो दिख जाएगा। और जब तक आप पहला एग्जाम नहीं दे देंगे, तब तक रीटेक का ऑप्शन आपके लिए विजिबल होगा ही नहीं। So to get this option, your job is to write the first exam. After that, you can, when you are going to write the exam, on the very same day, you are going to see your scorecard. After that, you can retake the exam. ठीक है? And in case you forget that which day and which center you have booked, you can click on view exam status. वहाँ पे वो आपका बता देगा किस दिन किस सेंटर पे आपका एग्जाम है। एंड और फिर यही सब चीज़ें ये हैं कि आपको सेंटर पे क्या लेना है। सो बेसिकली हाउ वुड यू लाइक टू टेक एनमैट एग्ज़ाम, ठीक है। सो एग्ज़ाम मोड आपको ऑनलाइन ही लेना है, एट द सेंटर ही भरना है, तो सेंटर पे जाइए। फ्रॉम होम का ऑप्शन आपका केवल इंडिया के बाहर अवेलेबल है, इंडिया के अंदर केवल आपका सेंटर पे ही एग्ज़ाम लेने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये बात ध्यान रखना है। वलेचा, आई थिंक इट इज अवेलेबल थ्रू इजी अप्लाई, मुझे लगता है कि इजी अप्लाई के थ्रू होना चाहिए, एक बार चेक कर लो, आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक इट शुड बी देयर। एंड और यहाँ पे अपना, जब अपना हमने क्लिक किया था स्लॉट पे, देन दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग, एग्जाम डेट्स जो हैं, और उसके बाद पॉलिसी एग्रीमेंट जो भी है। And when you are going to select a time, so for example, if I am going to go to if I am selecting that 9 a.m. thing, so this is going to look like this, left hand side पे आपको दिखेगा click confirm and your slot is booked. That's it, this thing you need to do, and as soon as you click confirm, आपका slot book हो जाएगा। And you can also look at the address of the center and actually find out what is the distance from your home to your center. And this is the dashboard. So once you have booked it, once you have clicked confirm, and you are going to reach at this point, और उसके बाद one thing, make sure that you view और प्रिंट कंफर्मेशन ईमेल, ये इसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर पे, ये जरूरी है, सो दैट इट टेल्स यू दैट दिस इज द प्रूफ। एंड आफ्टर दैट एडमिशंस पॉलिसी जो है उसमें ध्यान रखना है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर्स आईडी, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, एंड दीज आर द ओनली थिंग्स दैट आर नीडेड। एनमैट का जो एडमिट कार्ड होता है, उस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एडमिट कार्ड होता है उसमें आपकी फोटो प्रिंट होके आती है, तो आपको अपनी फोटो नहीं लगानी पड़ती। सो इफ यू आर गोइंग टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ एनमैट, ऑलवेज रिमेंबर इट इज कलर प्रिंट आउट, नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। जो आईडी आपको लेके जानी होगी सेंटर पे, दैट इज द ओरिजिनल आईडी, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कैरी विद यू, ठीक है। और आपका बेसिकली when you are going to take the admit card as well as your ID, so there are two things that they are going to match, one is going to be your name, second is going to be date of birth। अगर इन दोनों में से कुछ भी मिसमैच होगा तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, एंड दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट इट, सो मिसमैच नहीं होना चाहिए। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू कैरी योर एडमिट कार्ड, so remember, when you are going to write the exam, remember carry the original document, original passport, original pan card, original voters id, photocopy नहीं चलती है, ठीक है। And that's it, we are done।
उसके बाद अपना वो करके जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा, सो उसके बाद एडमिट कार्ड आपको सेम उस पे दिख जाएगा, सेम डैशबोर्ड पे यू आर गोइंग टू गेट योर एडमिट कार्ड, एंड दैट इज आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी 4 or 5 days before the exam you will get a admit card, so don't worry much about it. NMAT का एग्जाम फ्लो ये है कि इफ यू आर गोइंग टू राइट द एग्जाम एट 9 AM, it means you need to reach there by at most by 8:30. 8:30 के बाद तो स्कोप ही नहीं है, क्योंकि दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डू ऑल द स्टेप्स, क्योंकि उनके यहाँ आपका बायोमेट्रिक वगैरह होगा, सब होगा, so it takes close to 15 to 20 minutes. So if you are going to write the exam at 12 o'clock, then your job is to reach the center at least half an hour, at least half an hour I would say. थोड़ा ज़्यादा भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका पिक्चर होगा, फोटो होगा, आपका सिग्नेचर लिया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे टेस्टिंग भी होती है। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द एग्जाम देयर इज गोइंग टू बी टेस्टिंग, थोड़ी देर की होती है लेकिन वो टेस्टिंग होगी, ताकि आपका कंप्यूटर का काम कर रहा है, आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, सो फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स दे एक्चुअली टेस्ट आप वंस यू लॉग इन ऑन योर सिस्टम, ठीक है। देन वही स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, प्रॉक्टर आएगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, वही सारी चीज़ें, एंड टोटल 20 मिनट्स के आसपास इसमें लगता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो लोग पूरा करा लेंगे। सो अब ये बात है कि एनमैट कब लेना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं डेट्स देखना शुरू करूं इसमें, अगर मैं डेट्स देखना यहाँ पे शुरू करूं तो यहाँ पे एनमैट स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। एनमैट एनालिसिस यहाँ के आसपास आ जाएगा, क्योंकि हम में से कोई जाके दे ही देगा। कैट यहाँ पे है, ठीक है, दिस शुड बी 26 नॉट 25। स्नैप 13 को है, 19 को है और 26 को है, ठीक है। और एनमैट का विंडो 18 को खत्म हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द आइडियल डेट टू टेक एनमैट? आई वुड से कि एक बार एनालिसिस हो जाए, दैट इज ऑन 16th you should take 18 19 20 इसके आसपास एनमेट लोगे, then you are going to have rough idea that what kind of exam you are going to get. And so after analysis, basically I'm going to write the exam, more likely I'm going to write the exam in the first week itself, so you are going to get a decent idea that what exam is asking, if there is any pattern, और किसी एक टॉपिक का वेटेज बढ़ाया है, किसी एक टॉपिक का वेटेज कम किया है, because I think 2 years back they completely removed the geometry from NMAT. So analysis is going to start on 16th. We are going to someone is going to write the exam before 16th, so we are going to analyze our first actual NMAT on 16th. तो 16 के बाद I would say कि 2-3 दिन का गैप लेके आप लोगों को पेपर दे देना चाहिए। And last NMAT that you need to write, that would be, I would say that is optimum. I would say कि 10th तक एग्जाम दे दो, उसके बाद डिले नहीं करना है, उसके तब तक आपके पास बहुत टाइम है। यू हैव कैट, इफ यू फील लाइक दैट यू डोंट वांट टू राइट एनमैट नाउ, यू वांट टू राइट इट आफ्टर कैट, सो कैट के बाद भी दे सकते हो। आई वुड से इफ यू आफ्टर 29th टेक couple of days of break, 2 days 3 days, तो 4-5 को भी दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी फाइन, वेरी कंफर्टेबल। अगेन बिफोर we move before we end the session, uh, still my preferable exam is CAT. Gives you uh, more liberty, more options. So OpenCTC is live, as you all know, and you should understand the difference between your
द एट होम मॉक एज वेल एज योर टेस्ट सेंटर मॉक. सो ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. ठीक है. Now, non-cat test series, we also have non-cat test series. So in non-cat cat test series, we have what do we have? We have 10 marks NMAT, 10 marks SNAP, 8 marks ZAT, MSCT 15 marks, CMAT 15 marks, CUT PG 6 marks, MyCat 6 marks, others 12. So others में बहुत सारे आ जाते हैं. So basically others means XGMT type exams. Uh, and so basically in non-cat test series you have close to 82 mock test, and that is a huge number. As well as we always analyze everything whatever we do. So now if anyone has any doubt, kindly do let me know. So for telegram group we have, and let's with this let's conclude today's session. Thank you. Yes, Aditi, you want to ask something? Aditi, you can book the slot till 22nd of October. So you don't need to worry about booking it now. ठीक है. So first slot you can book till 22nd of October. So don't worry much about it कि बाद में बुक कर सकते हैं. Definitely बाद में बुक कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है. ठीक है. Okay.